Welcome to Lab 1 channel. Today I receive X1 Yoga 6th generation with battery detection problem. As you can see, 255% battery available, but not getting charged. It's showing fake 100%. If you see here, it's showing 255% available. When I unplug this charger, it's suddenly off. It's a very common problem in X1 Yoga 6th generation model. The shopkeeper already changed the battery, but no luck, and also he trying to repair the original battery, but the problem remains same. Now I decide to share with you guys how I solve this problem. If you see, when I measure the positive, it's showing 3.6 volt. The main reason behind this problem, I tell you in simple words, the main reason is behind this problem, the jack is faulty. I show you. As you can see, I connected this jack, battery jack. When I measure positive wire, you can see it's showing connectivity. Second red wire, good connectivity. Yellow wire, third yellow wire, as you can see, it's showing negative 0.7 volt, no connectivity. It should be showing connectivity, but this time it's showing DC minus 7.7 volt. Next, the white one. Next, the white fourth wire, it's showing connectivity. Fifth blue wire, showing good connectivity. Ground wire, no connectivity, it's showing 0.7 volt. Next, black wire, it's showing 11 volt, negative 11 volt instead of connectivity. We need to solder these points.
going to solder the battery jack terminals. I'm going to check connectivity again. First red, good connectivity. Second red, good connectivity. Third yellow, no connectivity. Fourth white, good connectivity. Fifth blue, good conductivity. Second last black, good conductivity. Last black, good conductivity. Yellow is missing. We need to solder it again. Now third yellow, good conductivity. Fourth white, good conductivity. Fifth blue, good conductivity. Both negative have good conductivity. Let's see it's working or not.
Now you can see I remove the charger and the battery is showing 21%. The problem is solved. Now in Hindi, मेरे पास ये X1 योगा 6 जनरेशन का लैपटॉप आया था। ये एक शॉपकीपर है, स्टैंड कंप्यूटर इनका था। इसमें प्रॉब्लम थी कि ये बैटरी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। बैटरी जो शो करता था, कभी नो बैटरी कहता था और कभी कहता था कि ये 225% चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज है, लेकिन ये चलती नहीं थी। जैसे ही चार्जर उतारते थे तो ये बंद हो जाता था। तो जब उन्होंने इसकी बैटरी रिप्लेस भी करके देखी थी और इसमें बैटरी को रिपेयर भी करवा के देखा था जो उसकी ओरिजिनल बैटरी थी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जब मैंने इसको डायग्नोस किया तो मुझे पता चला कि इसके जो जहाँ से इसका SDL SCL आता है, वहाँ पर जब मैंने मीटर लगाया तो वहाँ पे वोल्टेज शो हो रहे थे माइनस में। ठीक है, तो मुझे उससे थोड़ा आइडिया हुआ कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। तो ये शायद ये कनेक्टर में कोई फॉल्ट मसला है कि जो ये और साथ में जब मैंने इसका नेगेटिव चेक किया तो नेगेटिव में भी पॉजिटिव वोल्ट शो नेगेटिव वोल्ट शो हो रहे थे। हालांकि नेगेटिव में तो हमें वो कंटिन्यूटी देना चाहिए मीटर को, तो ये ग्राउंड होती है नेगेटिव इसकी, लेकिन वहाँ पे भी वोल्टेज शो हो रहे थे, नेगेटिव में शो हो रहे थे लेकिन वोल्टेज शो हो रहे थे। तो उससे मुझे लगा कि ये इसके ना ये जैक में मसला है। फिर जब मैंने एक एक टर्मिनल को चेक किया तो वाकई जैक में मसला था, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी। फिर मैंने इसको ये सोल्व किया आपके सामने, अब ये चल रहा है, बिल्कुल ओके चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।